Hello friends, my name is Aman Gupta and welcome to my channel Engineers Coding Hub. In this is the another video of our OOPS placement series. In this video we will discuss about the polymorphism. We will discuss this is the one of the pillar of OOPS. In this video we will discuss all about the polymorphism, like how the things are working in polymorphism, and what is the most important question, which is the most important for interview purpose. We will discuss all the things and we will also do the practical. Okay, so please watch this video till the end. Okay, so let's discuss about it. So what is polymorphism? So सबसे पहले polymorphism में बात आती है definition. So how can we tell the definition in front of interviewer? So this is the simple definition you have to ask. Okay, so what is the definition? So the word polymorphism is derived from a combination of two words. This is the polymorphism is a combination of two words. First is poly and second is morph. And the poly means, yeah, you have to describe the means. What is the meaning of poly? So like multiple, and the morph means is a multiple forms. When a same thing with multiple form. So basically क्या होता है कि same thing जब मल्टीपल तरीके से बिहेव करती है, दिस इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म. इसे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर भी बोलते हैं. Okay, okay. So this is a simple definition of polymorphism. And after that, you can say that the when a single entity, a single class behave differently in a different situation. So this is called a polymorphism. When a single entity behave differently in a different situation is called a polymorphism. Sometimes interviewer ask you real world example दो भाई. रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है कि व्हेन लाइक जैसे कोई स्टूडेंट है, तो अगर वो कॉलेज में है, तो इन कॉलेज में वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए स्टूडेंट बिहेव करेगा. बट जैसे ही वो घर जाएगा और अपने मदर एंड फादर के सामने इन फ्रंट ऑफ देयर मदर एंड फादर, तो वो एज अ सन और डॉटर बिहेव करेगा, है ना. सो दिस इज द पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करना, पॉलीमॉर्फिज्म. लेट्स सी द एग्जांपल. जैसे अगर अपन लैंग्वेज की बात करें जावा में, देयर इज अ प्लस ऑपरेटर डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन. कैसे? सो व्हेन वी यूज द प्लस ऑपरेटर विथ इंटीजर्स, then it act like a plus. Like when we add two integers, so it just add कर देगा, like 9 plus 2 is equal to 11. बट सेम प्लस ऑपरेटर अगर अपन स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे, लाइक अगर अपन ऐड करेंगे गुड प्लस मॉर्निंग, तो इट विल बिकम अ गुड मॉर्निंग. तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है. जैसे यहाँ पे प्लस ऑपरेटर दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा है, तो सिचुएशन डिफरेंट है कि भाई दो इंटीजर को ऐड करना है, तो ये डिफरेंट तरीके से ऐड करेगा. लेकिन अगर दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो इनको कंकेटिनेट करेगा, तो यहाँ सिचुएशन अलग है. तो प्लस ऑपरेटर बिहेव डिफरेंटली इन अ डिफरेंट सिचुएशन. दिस इज द सिंपल एग्जांपल यू कैन से कि प्लस ऑपरेटर भी एक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का. ओके, लेट डिस्कस द type of polymorphism. So there are two type of polymorphism in OOPS. First is compile time polymorphism and second is runtime polymorphism. So before uh, watching this video, you have to be a knowledge of method overloading and method overriding. Because अगर आप इसके पहले आपके अगर ये वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके देख लीजिए. बिकॉज इनके बिना आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी. तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक फाइंड करके आप देख सकते हो. ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरराइडिंग की. वहां से आप जाके पहले वीडियो मेथड ओवरराइडिंग मेथड ओवरलोडिंग की वीडियो देख सकते हैं. उसके बाद यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो. ओके, लेट डिस्कस द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम polymorphism nothing but a method overloading. So when we overload a method in our class, this is called a method overloading. तो जब अपन ऐसा करते हैं तो this is called a compile time polymorphism. This is simply. So let's discuss the definition of compile time polymorphism. So compile time polymorphism is also known as method overloading. Is also known as method overloading. It occurs when multiple method in a same class have the same name but different signature. तो signatures की अपन ने बात की, different same name की बात की. This is I have already discussed in our method overloading video. तो अगर आपने जाके नहीं देखी है तो पहले आपको वो देखना जरूरी है. ओके, नहीं तो आपको कोई चीज समझ में ही नहीं आएगी. Okay, so this is the compile time polymorphism. This is nothing but the method overload. So let's see the example. So this is the math operation class, and inside it we have a add method which I have overloaded. Like it take a two argument which have a data type int, so it will just add a two integers. And second one is that this is how I have overload this method कि add method same name with different signature. And return type से कोई फर्क पड़ता नहीं है, we have already discussed. So है ना, तो मेथड रिटर्न टाइप से मेथड ओवरलोडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो
जैसे सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए बस, जैसे इसमें डबल दो वैल्यू है तो ये ऐड दो डबल वैल्यूज को कर रहा है, इसका सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट। एंड इफ यू सी दिस वन, this take a three argument which data type is integer, so you just add a abc and just return. Okay, so when we create a object of this new math class and when we call this add method, okay, using this reference, this class के reference से अगर अपन इस मेथड को कॉल करेंगे, लाइक अपन पास करेंगे 2 and 3, भाई ये दो इंटीजर जो मेथड एक्सेप्ट कर रहा है एड मेथड, देन इट विल कॉल दिस मेथड, नॉट डबल वाला तो कॉल नहीं करेगा क्योंकि रिटर्न टाइप डेटा टाइप उसकी इंटीजर है एंड 2 आर्गुमेंट है, तो ये वाला है मेथड, तो ये वाला कॉल होगा। देन जब डबल वैल्यूज आएंगी और दो ही वैल्यू आएंगी देन दिस विल कॉल दिस ऐड मेथड, अगर तीन वैल्यू आएंगी वो भी इंटीजर वाली तो दिस विल कॉल दिस मेथड। दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। ओके, सेकंड वन, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म पूछ रहा है तो हमेशा इस पे ही आती है बात, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग तो एकदम सिंपल हो जाती है, बट डिफरेंट बात इस पे आती है मेथड ओवरराइडिंग। सो दिस इज आई हैव आल्सो ऑलरेडी डिस्कस, सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले देख लीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। ओके, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, so let's discuss the compiled run time polymorphism definition. Runtime polymorphism is also known as method overriding, तो इसको मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। इट अकर व्हेन अ सब क्लास प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज आल्सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, अपन मेथड ओवरराइडिंग की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक अगर अपने पास पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास है एंड उसको चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है या एक्सटेंड किया हुआ है, तो अगर पेरेंट क्लास का कोई मेथड है उसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन अपन लिखना चाहते हैं अपनी चाइल्ड क्लास में, सो दिस इज कॉल्ड अ मेथड ओवरराइडिंग, है ना। दैट मेथड टू बी एग्जीक्यूट डिटरमाइंड एट रन टाइम, तो मेथड एग्जीक्यूट कब होता है, डिटरमाइन की कौन सा मेथड कॉल होगा, इट इज ओनली डिस्कस, इट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो जो अपन लेट बाइंडिंग एंड अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट करेंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल एग्जांपल है कि लेट्स टेक अ क्लास एनिमल एंड इनसाइड दिस क्लास वी हैव अ साउंड मेथड। तो अपन भाई एनिमल का साउंड कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं जबकि अपन को पता ही नहीं हो कि भाई एनिमल किस टाइप का है, लाइक अगर डॉग होगा तो बार्क करेगा, कैट होगी तो म्याऊ करेगी, तो डिफरेंट एनिमल हैव देयर ओन वॉइस और ओन साउंड। सो अपन यहाँ पे वो कर ही नहीं सकते, डिसीजन ले ही नहीं सकते कि भाई साउंड कैसा होगा। सो वी नीड टू ओवरराइड, सो लेट्स क्रिएट अनदर क्लास डॉग विच एक्सटेंड दिस एनिमल, सो वी नीड टू ओवरराइड दिस साउंड क्लास, ए साउंड मेथड, क्योंकि डॉग का साउंड अलग ही होगा, डिफरेंट होगा, लाइक डॉग्स बार्क्स, है ना। दिस इज सिंपल। ओके, let's same thing apply on a cat. Let's create a cat class which extend the animal because cat is a element, so it is a inheritance में क्या होता है, is का relation होता है, is आ का। ओके, कि cat is a animal, this is the simple as a relation। तो डिफरेंट तरीके से पूछ लेते हैं कभी कभी इनहेरिटेंस की is का रिलेशन क्या होता है, so this is nothing but a inheritance। in that case you have to tell them about the inheritance कि is का मीन्स ये होता है कि cat, जैसे cat है तो it is a animal। अब कैट के अंदर एक साउंड मेथड है, बिकॉज कैट की अगर साउंड डिफरेंट है तो वी नीड टू ओवरराइड दिस एनिमल के अंदर का जो साउंड मेथड उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि वी नीड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, तो यही कहता है ना मेथड ओवरराइडिंग, कि स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देना हो तभी आप ओवरराइड करो। सो दिस इज द मेन क्लास, इनसाइड दिस क्लास आई एम क्रिएटिंग द फर्स्ट आई क्रिएट द रेफरेंस, क्योंकि पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है। दिस इज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर इनहेरिटेंस वाली वीडियो में। एंड लेकिन चाइल्ड क्लास का रेफरेंस कभी पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर सकता। ओके, सो सो इफ आई कॉल, तो ये ऑब्जेक्ट अभी पेरेंट क्लास का रेफरेंस जो है वो डॉग क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो व्हेन आई कॉल दिस साउंड मेथड तो ये डॉग वाले साउंड मेथड को कॉल करेगा। ओके, डॉग वाले साउंड को, ऐसा क्यों होता है, which is again a question which is I have already which I will discuss in our next video, okay, which where I have learned the early binding and late binding concept। So this is early binding and late binding also a one more important question about the interval, so आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, एंड दिस इज सिंपल, आई एम क्रिएटिंग अ कैट ऑब्जेक्ट एंड आई दिस पॉइंटिंग पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है वो कैट के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर रहा है, तो जब पॉइंट कर रहा है कैट के ऑब्जेक्ट को देन आई कॉल द साउंड मेथड, तो दिस विल कॉल द साउंड क्लास, साउंड कैट क्लास की साउंड मेथड को कॉल करेगा विच प्रिंट द कैट में ऑल्सो, वी विल सी द एग्जांपल आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। सो okay, so let's do the practical। okay, so just go on the online GDP।
select Java here, not C++, Java. Let's remove this code. Okay, and let's create a class animal. And inside this class, we need to provide the one method which is sound, which don't return anything, just return type is void. The class and the method name is sound. Inside this class, I am printing something. System dot out dot println and sound. Okay, so this is the my parent class. Let's create another one. Let's create a class which name is dog, which extend this animal class because again यहाँ पे is का relation है. Okay, ये dog is a animal. तो अपन को डॉग का साउंड डिफरेंट होगा, सो वी नीड टू ओवरराइड दिस साउंड मेथड. सो जस्ट क्रिएट अ पब्लिक, तो एकदम सेम होना चाहिए. ओके, मेथड ओवर लोडिंग में क्या होता था कि सिग्नेचर डिफरेंट होता था, तो इसमें कोई भी चीज डिफरेंट नहीं होगी, पर उसमें रिटर्न मेथड ओवर लोडिंग में रिटर्न टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर यहाँ पड़ता है. ओके, तो यहाँ भी रिटर्न टाइप एकदम सेम ही होनी चाहिए. यहाँ पे इवन दिस इसका भी फर्क होता है कि पब्लिक है कि प्राइवेट. तो अगर यहाँ पब्लिक है यहाँ प्राइवेट है, तो इट विल गिव द एरर. Okay, we will see in our next video, so don't worry about it. So override this sound method, printing something inside this method like dogs barks. Okay, dog barks कर देते हैं. Let's create another one. This is cat. Cat which extend this animal because again it is a relation. Cat is an animal. So public void sound. तो इसमें भी अपन को स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देनी है, तो मेथड ओवरराइडिंग करनी ही पड़ेगी. तो इट विल ओवरराइड दिस साउंड मेथड. एनिमल क्लास का साउंड मेथड है, उसको ओवरराइड करके स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन देगा. साउंड दैट प्रिंट एलन. तो कैट मियाउस. ओके, दिस इज सिंपल. लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. So before creating the object, just create a parent class reference. So animal is our parent class. Just create a animal class का अपन ने reference create किया. This is how I am creating reference. Okay, this is how I'm creating the reference, which is animal class. So this is not a animal, it's an animal. Animal. Okay, and एनिमल क्लास का जो रेफरेंस है वो पॉइंट करेगा डॉग क्लास की. डॉग क्लास ठीक है, या चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल क्लास. तो पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है वो चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है. सो जब चाइल्ड क्लास की राइट डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो व्हेन आई कॉल द साउंड मेथड, इसका यूज करके अपन साउंड मेथड को कॉल करेंगे, तो कौन सा साउंड कॉल होगा? तो इट विल प्रिंट दिस, ये वाला कॉल होगा. बिकॉज अगेन अ क्वेश्चन, ये भी कैसे कैसे कॉल हो रहा है, कैसे क्यों यही कॉल क्यों हो रहा है, तो दिस I will discuss in our next video, which is a late binding and early binding. Okay, so this is printing, क्या print करेगा? Dog sparks. एंड देन अगर अपन जो एनिमल का रेफरेंस है वो अगर किसी दूसरी क्लास लाइक जैसे कैट क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट कर रहा है, देन अगर अपन साउंड मेथड को कॉल करेंगे, तो इट विल कॉल द साउंड मेथड ऑफ द कैट क्लास के साउंड मेथड को कॉल करेगा. इट विल प्रिंट द कैट म्याउस. ओके, so let's execute it, see what will happen. So you can see when जब भी अपन ने डॉग के अगर क्लास को पॉइंट कर रहा है रेफरेंस देना, अगर अपन साउंड मेथड कॉल करेंगे तो डॉग की एक डॉग क्लास की साउंड मेथड को कॉल करेगा. ओके, दिस इज नॉट अ कैन, दिस इज अ कैट. देयर इज अ मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, सो व्हेन अगर अपन कैट क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर पॉइंट कर रहा है,
अगर तब अपन साउंड मेथड कॉल करेंगे देन इट विल कॉल द कैट क्लास के साउंड मेथड को प्रिंट कॉल करेगा। ओके, कैट म्याउस। ओके, दिस इज सिंपल। So this is all about the polymorphism. In the next video, we will discuss about the late binding in early binding, which is the most important because अगर मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि ये पूछते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल है, मेथड ओवरलोडिंग बता दो कि भाई सेम क्लास सेम नेम पे डिफरेंट सिग्नेचर। बट यहाँ पे थोड़ा फंसते हैं लोग, इसलिए वो पूछते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये कर देंगे तो ये कैसा होगा। तो वी विल ऑल थिंग्स आई विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।